So today we will talk about the processes of rDNA technology. So whenever any product is to be produced in large amount, we do processing. So we know the very first step in rDNA technology is isolation of DNA. Second step is fragmentation of DNA. By restriction endonuclease. Third step we know, transfer to host cell for cloning. Then if we talk about isolation of DNA, let us see the steps involved during processing. For isolating DNA, we need to use enzymes like lysases, which will help to break all those barrier of the cell which will not let to reach the nucleus. So first of all, we will dissolve the cell wall by using various enzymes. Like for fungus we use chitinase, for bacterial cell we use lysozyme, for plant cell we use cellulase, for animal cell there is no cell wall, so we use protease, lipase directly. So various lysases enzyme will break the cell wall. Then after the breakdown of the cell wall, if protein is to be removed, we use proteases for cell membrane and lipases for cell membrane. Then if we have to dissolve the RNA, then we use RNase. RNase is used. Then the next step involved is the precipitation of DNA. Precipitation of DNA is done using chilled ethanol. Chilled ethanol. So if we make use of chilled ethanol after making use of these enzymes, then if suppose this is our material from where we have to isolate DNA, then after adding the chilled ethanol, DNA precipitates out like a mass of thread. This is our DNA. That process of removing the DNA from this mixture after adding chilled ethanol is called spooling. So all these steps, that is use of enzyme to break the walls. If we have to remove protein, you know protein is always present along with DNA. DNA is present along with histone protein. So in order to dissolve protein, we need to have protease, and RNA will be removed by RNase. Then precipitation will be done by using chilled ethanol. DNA will spool out, and this step is called as spooling. Now we will move to the next. So after isolation, the next step is digestion.
of DNA, and digestion of DNA will be done using restriction enzyme. Restriction enzyme, which will cut DNA into pieces. Then the third step is making fragments of DNA. That means fragmentation. And for this technique, because we are talking about the process, that is processing, we need to apply a technique called gel electrophoresis. Gel electrophoresis. And as it is the process of electrolyte, where electrolyte is used, so here we will apply the electricity. That means the DNA which is negatively charged will move towards the opposite pole. So let us see how gel electrophoresis is done. So for gel electrophoresis, the very first thing we need to use is the use of agarose gel. Agarose gel is a jelly-like substance which is obtained from algae, and it is called agar-agar. The source is agar-agar, which is an algae. Now this agar is available in the market in the form of powder, which is mixed with distilled water. Now what is being done, when both the things are mixed together, it becomes a paste like material which get hardened up, because it's a jelly like substance, and it gets set where we will collect the fragments of DNA. Fragments of DNA. So first of all, for carrying out the electrophoresis, because it is gel electrophoresis, so here this gel source is agarose, which is obtained from agar-agar. Now let us see the next step. So the DNA which are fragmented or which are digested by using restriction enzyme will be taken up in the block where agar gel is used, that is agarose gel, and a trough will be brought which has DNA which is digested by restriction enzyme. Now these DNA pieces, they are of different molecular weight. So those DNA which are of heavy molecular weight, they will remain, or they will not be able to travel much because they have high molecular weight. So those DNA which are bigger in size, heavy particles, they will remain in the top layers, whereas the fragments which are of smaller size, they will move apart because they can travel more, being lighter in molecular weight. So this is one way of separating DNA fragments. Now let us talk about the principle on which gel electrophoresis is based. So the first principle is isoelectric focusing. Isoelectric focusing. And the second principle is separation of fragments. On the basis of size. On the basis of size. Of the particles on the gel.
So these are two principles on which the gel electrophoresis will depend. So let us talk about what is isoelectric focusing. So it is the method in which the charged particle move towards opposite pole. Now let us understand this in detail. As you know, DNA is negatively charged. So when we will supply the current, then being negatively charged, it will move towards the cathode. So this is the first principle on which gel electrophoresis depends. Second one, on the fragments will be separated on the basis of size of the particles on the gel. So let us understand that how DNA will be separated when the electricity will be supplied. So isoelectric focusing depends on isoelectric point. Right now we will talk in context of DNA. So when we take the buffer solution is one where the ions are present. Okay. Now what will happen if we bring DNA in a trough on it, and suppose this is our positive charge and this is our negative charge. So when the DNA is brought in a trough with sieve, the DNA being negatively charged will start moving, and the point at which DNA loses its charge, because here the pH a particular pH is present. Suppose here there is, say about the pH is 7 and here the pH is 14 and here the pH is about 0. So when DNA will move from this trough to this medium, so the point at which this DNA will lose its charge, okay, it will try to move towards its positive charge, and the particular point at which the DNA will lose its charge, it will get fixed up. Suppose this DNA is coming at this point between the pH 7 to 14, because it is trying to move towards the positive charge because DNA is negatively charged. So this is how we will get different fragments of DNA using this technique, that is isoelectric focusing. Now once this medium is a gel, then what will happen? The DNA, once they get separated, they can be scooped out the way the ice cream is removed with the help of scoop. So DNA can be scooped out, and here I have shown the DNA are appearing to be red, and to give colored DNA we use the substance called ethidium bromide. तो जब हम ये टेक्निक करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, जो ये अगारोस जेल है, we will put ethidium bromide in it.
जिससे क्या होगा कि जो डीएनए है वो एक पर्टिकुलर कलर को एब्जॉर्ब कर लेंगे और ये डीएनए हमें ऑरेंज बैंड की तरह दिखाई देंगे अगारोस जेल पर, जिन्हें हम आसानी से देख सकते हैं और उनकी कटिंग करके पीसेस में उन्हें सेपरेट कर लेंगे। फिर हम उसको देखने के लिए यूवी लाइट का यूज करेंगे। That means UV visualization will be done. So let us understand these steps first, then we'll reach to UV radiation. First of all, DNA in this broken pieces, or you can say the DNA which is separated or cut into pieces with the restriction enzyme is brought near to this chamber where we have applied the polarity. Here there will be the negative terminal of the battery and here there will be positive terminal of the battery. DNA being negatively charged, they will try to move towards the positive terminal of the battery. Now what will happen? DNA will come under the influence of this buffer and will lose the charge. So कुछ डीएनए पॉजिटिव तक पहुंच पाएंगे और कुछ नहीं पहुंच पाएंगे। तो इससे क्या होगा, डीएनए के फ्रैगमेंट्स एक दूसरे से सेपरेट हो गए। अब हमने क्या करना है कि डीएनए सेपरेट हो उससे पहले हमने अगारोस के अंदर इथिडियम ब्रोमाइड भी डाल दिया और इथिडियम ब्रोमाइड डालने से क्या होगा कि डीएनए हमें अलग अलग सेपरेट कलर पीसेस दिखाई देंगे, दैट इज ऑरेंज कलर में दिखाई देंगे। ऑरेंज कलर पे दिखाई देने की वजह से we can separate them easily, and this method of separating DNA is called elution. This is very important. Scooping out of DNA from agarose gel is called as elution. तो हमने ये डीएनए के जो फ्रैगमेंट सेपरेट कर लिए। अब हम इसे यूवी लाइट में तब देख सकेंगे क्योंकि ये अभी सिंगल स्ट्रैंडेड हो चुके हैं। तो अगर हमें इन्हें यूवी लाइट में देखना है तो हम इनको अब डबल स्ट्रैंडेड बनाएंगे। अब वो कैसे बनाएंगे? दैट वी विल मेक देम बाय यूजिंग नोन सीक्वेंस ऑफ डीएनए, दैट इज प्रोब। अब हम लेके आएंगे प्रोब। तो जो डीएनए हमें रेड कलर के सीक्वेंसेस में मिल चुके हैं, दैट इज अभी ये अगारोस जेल के ऊपर चिपके हुए हैं, और अब हम लाएंगे प्रोब। प्रोब होंगे वो सीक्वेंसेस जिसमें हमें पता है कि कौन से बेसिस लगे हुए हैं। सपोज दिस इज आवर ATCG, ये हमारा नोन सीक्वेंस है और ये है हमारा प्रोब जिन्हें हम आर्टिफिशियली बनाएंगे। और जो डीएनए इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो इसके साथ जुड़ जाएगा। जैसे आपको पता है ए के साथ क्या जुड़ेगा? टी, टी के साथ ए, सी के साथ जी, जी के साथ सी। तो ऐसे सीक्वेंसेस को ये पकड़ लेगा प्रोब और उसको डबल स्ट्रैंडेड बना देगा। जो प्रोब होगा वो हमारा रेडियो लेबल्ड भी होगा ताकि हम इसको ट्रैक कर सकें। तो जब ये हमारे प्रोब जो हमने सेपरेट करे हैं फ्रैगमेंट के साथ जुड़ जाएंगे तो आप इसे आसानी से कहाँ देख सकते हैं? यूवी लाइट में, और आप इनको स्टडी कर सकते हैं। सो दिस इज द मेथड ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जब हम इनको अगारोस जेल से काट रहे हैं तो अगारोस जेल से क्या होगा कि हम इनको ज्यादा देर तक स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक और टेक्निक अप्लाई करेंगे ताकि हम अपने जो इतनी मेहनत से हमने ये फ्रैगमेंट्स निकाले इन्हें ज्यादा देर तक स्टोर कर सकें। इसके लिए हम करते हैं ब्लॉटिंग। द नेक्स्ट मेथड इन्वॉल्व इज ब्लॉटिंग। और 3 टाइप की ब्लॉटिंग होती है, जैसे कि सदर्न ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉटिंग हम यूज करते हैं डीएनए के लिए। फिर हम करते हैं नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग दिस इज डन फॉर आरएनए। और एक और ब्लॉटिंग है दैट इज वेस्टर्न ब्लॉटिंग, जो कि हम करते हैं प्रोटीन के लिए। तो अभी हम डिटेल में देखते हैं डीएनए के लिए, दैट इज सदर्न ब्लॉटिंग। अब ये सदर्न ब्लॉटिंग क्या होती है, क्योंकि और हम इसे क्यों कर रहे हैं? सदर्न ब्लॉटिंग हम इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर हम अगारोस जेल में ही अपने डीएनए को छोड़ देंगे तो वो सूख कर खराब हो जाएगा।
तो अगर हम इसे ज्यादा देर के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो southern blotting will help us to store DNA for a longer duration. So let us understand how southern blotting is done. So southern blotting was given by E.M. Southern. Is the name of scientist. Okay, like gel electrophoresis was given by Tiselius. ये आपको नाम याद रखना है. So gel electrophoresis was given by Tiselius, whereas southern blotting was given by E.M. Southern. अब इसका concept क्या है? Let us understand. So here we have to take a big trough. ट्रफ के अंदर आपने ले लिया बफर सॉल्यूशन. दिस इज आवर बफर. यहां हमने एक ग्लास का ब्लॉक लेना है और यहां लगेगा आपका एक फिल्टर पेपर. अब जो ये फिल्टर पेपर हमने यहां लगाया है, इसके ऊपर हम रखेंगे लेयर अगारोस जेल की, जिसमें है हमारे डीएनए के फ्रैगमेंट्स. ये है हमारे डीएनए के फ्रैगमेंट्स. तो ये है हमारा अगारोस जेल. और ये टेक्निक मैंने आपको बताया इसलिए हम कर रहे हैं ताकि अगारोस जेल अगर सूख जाए तो हमारे डीएनए खराब ना हो, इसलिए हम कर रहे हैं सदर्न ब्लॉटिंग. तो अगारोस जेल की लेयर हमने लगा दी. इसके ऊपर हम लगाएंगे एक और लेयर, वो है नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन की लेयर. दैट इज नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन. नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन. और एट द टॉप वी विल कीप अ वेट. तो यहाँ हमने एक वजन रख दिया और ये वजन कुछ भी हो सकता है, जैसे 10 ग्राम 20 ग्राम एनीथिंग. अब हम इसे अंडरस्टैंड करते हैं इस टेक्निक को. ये जो हमने रेड कलर का फिल्टर पेपर लगाया है, ये क्या करेगा, ये बफर को सोखेगा और सोखने के बाद धीरे 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 ये सोल्यूशन ऊपर की तरफ आएगा. यहाँ है हमारे अगारोस जेल जिसके ऊपर लोकेटेड है हमारे डीएनए जिनको हमने फ्रेगमेंट करा है. ठीक है. तो अगारोस जेल के साथ जो डीएनए हमने यहाँ लगाए हैं, ये जो मॉइस्चर बफर है ये अगारोस जेल उसको एब्जॉर्ब करेगा और डीएनए भी उसे एब्जॉर्ब करेंगे. जैसे ही डीएनए उसे एब्जॉर्ब करेंगे, डीएनए नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन की तरफ माइग्रेट करेंगे. क्यों करेंगे? क्योंकि डीएनए हैज मोर एफिनिटी फॉर दिस सब्सटेंस कॉल्ड नाइट्रोसेल्यूलोज. तो जैसे ये एब्जॉर्प्शन हुआ इस रेड वाली लेयर फिल्टर पेपर से, ये पहुंचा अगारोस के पास. अगारोस ने हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स को लूज कर दिया. लूज होने के बाद ये नीचे की जगह ऊपर भागने लग गए क्योंकि यहाँ पर है हमारा नाइट्रोसेल्यूलोज. क्योंकि डीएनए और नाइट्रोसेल्यूलोज में अट्रैक्शन है, एफिनिटी है. तो ये डीएनए जाकर नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन के साथ चिपक जाएंगे और हम इनको नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन को निकाल लेंगे डीएनए के साथ, जो कि इजीली ड्राई नहीं होते हैं और इन्हें लॉन्ग ड्यूरेशन तक हम डीएनए फ्रैगमेंट को स्टोर कर सकते हैं. तो southern blotting will help us to store DNA for longer duration as agarose gel will dry up and will spoil our DNA fragment. So this ends up our today's session. We will continue next. Thank you.